ये collaboration, it's a collaborative effort wherein ऐसा नहीं कि like एक बंदा जो है बाहर का बंदा कंपनी से फ्रॉड कर सकता है. It is always somebody, the insider is the main culprit. He is the one who is assisting. तो ये चैलेंज में ये है कि like बाहर वाले भी हैं, अंदर वाले भी हैं. So we have to work as a team to identify them. That's the main motto here. Just to give you the perspective, what is the value or the quantum of insurance fraud that is happening? It is close to $6.4 billion, right? This includes all sorts of fraud, right from mis-selling, impersonation, claims, or whatever you call it. It's all put together. And this is for the entire industry, which costs around 10 to 12% or 15% of the entire company's revenue. So it's a huge, huge amount. छोटा amount नहीं है. Most of the companies or some of the countries का ये GDP भी हो सकता है, right? और इसमें life insurance का share maximum है. So if you look at close to 85% of this particular share, it goes into life insurance. Non-life का है, but that is very minimal. But life insurance का maximum contribution है. Or the other way to put it across, life insurance is more vulnerable to these kind of frauds. क्या कारण हो सकता है? Sum assured. Investment versus return. Yes. If I had to talk, okay, for example, 10,000 इन्वेस्ट किया, 1 लाख का सम एश्योर्ड मिला, तो कौन सा, I mean, even if you invest in equity also, you don't get such kind of returns, right? 6 महीने पैसा वापस, right? So that's a main thing. If I had to talk about types of life insurance frauds, generally policy holder जो अपने customers होते हैं, they are the one who are the committing fraud with the organization. जो अपने ग्राहक जिसको हम बोलते हैं customer, then the employees of the organization, they always connect other external parties. तो उनके साथ होता है. Then we have somebody called as intermediaries जो अपने agent, broker वगैरह होते हैं. Then finally it is external parties. This is where I require your support, where to nab the external parties. ये अपना nexus जो बोलते हैं. So they always collide with employees or the agents and then they commit the fraud. So it's always ऐसा नहीं कि एक बंदा कुछ कर सकता है. So मिले जुले इन लोगों ने कुछ काम कर सकते हैं. Right? So this is where the detective investigation comes into picture, where we require collective effort to curb this kind of mess. External में nexus हो सकते हैं, medical center हो सकते हैं, where the customer he has to undergo for some medical examination. Even some of the agencies who provide services to the insurance companies. Be it a surveyor, be it any vendor who provides any kind of assets or materials, they also connect with the nexus. They get into fraudulent activity. Right. To come back to the main topic, insurance में ज़्यादातर claims में fraud होता है. That is death claims. Death claim, like as I said, 10,000 इन्वेस्ट करो तो सम एश्योर्ड जो रहता है that is 1 lakh. So minimum 10 times. तो maximum का कुछ लिमिट नहीं है. तो again that varies from product to product of life insurance. So it is a huge amount. Somebody is investing some amount, X amount, is getting 10 times, and it's very easy to commit fraud. आजकल fraudsters they are thinking in long-term perspective. I'll give you an example in the coming slides. It's always a long-term what the fraudster or the nexus they are indulging into, right? So when I have to talk about death claims, it is bifurcated into two: early claim and non-early claim. Early claim means policy आज issue करते हैं तो 3 साल के अंदर
वो claim submit करते हैं. So after 3 years, it is non-null claim. So there are challenges also. When I say early claim, IRDA regulation it says IRDA का जो concept है 3 साल के अंदर company has all the right to question the customer. In case if they find any fraudulent activity, yes, company has the right to go ahead and cancel the policy or question the customer. 3 साल के बाद no questions asked. Even if there is a fraudulent element present in that particular insurance contract, company do not have right to question the customer. Company has to pay, even though it is a fraudulent customer or the documents or whatever you call, company has to pay. So this early and non-early, that is where it is very important. I will ask over there. So even if a customer at the entry stage has not done fraud, but he does fraud at the claim stage, then it can be rejected. No, if it is as per IRD in section 45, any fraud that you identify, you have only 3 years timeline to identify. Even after that, if it is at the claim stage may suppose you may say like customer is still alive but claim has been registered. Only in that scenario, yes, you can reject the claim. Otherwise, in other case also, suppose if customer has done a suicide and he is claiming that it was a natural death, then also it will be rejected. Suicide clause, it says as per IRD is 1 year from the date of the policy taking, 12 months. So how will a policy holder or a company know that at the time of policy purchase he will suicide? He has suicide after 10 years. Okay. So except payable. After 1 year payable. 1 year exception. आफ्टर 1 year पेएबल को कोई सीन नहीं होता. आज अगर पॉलिसी लिया 1 जनवरी 2010 को और वो 15 जनवरी 2025 को अगर वो उसमें सुसाइड फांसी पे चढ़ गया खुद से, तो then why it is payable? Yes, you have to pay. After 1 year, suicide is also payable. It is payable. After 1 year of what? 1 year of policy. 1 year of policy. How is it related to policy then? Because policy के टाइम पे तो वो he was a fit man. There was no need of that time was he has never thought of doing suicide. Correct. Yes, I agree. He thought of doing suicide after 10 years. Correct. तो उस समय मतलब तो भी चलेगा. नहीं उस समय I think someone has to challenge this idea. Life means all different. The thing is, okay, I mean that's a different topic altogether. But still, what happens is somebody is committing suicide. It's a mental depression, out of which normally that's when the person he commits suicide. As per IRDA clause, if somebody is taking a policy with fraudulent intent, कि चलो मैं अभी 6 महीने के बाद मैं सुसाइड कर देता हूँ, just because I am ending my life, I don't want my family to suffer. तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक पॉलिसी बड़ा सा पॉलिसी दे देता हूँ, तो 6 महीने में मैं कमिट कर देता हूँ. So that is where it is fraudulent, and IRDA says that you cannot honor such thing. That is 1 year. Beyond 1 year, हालात बदल जाते हैं, तो obviously you have to pay the claim. सर आई हैव स्मॉल डाउट. अगर कैंसर पेशेंट है, ले लिया, अभी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि आफ्टर 4 years तलक भी थोड़े जगह बच जाता है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में. अगर 3rd year क्रॉस हो गया, 4th year में पड़ गया अगर, तो भी पे होगा. पे करना पड़ेगा. पे करना पड़ेगा. As a company, we have to pay. Suppose a person policy. Their intention is sorry sir. Within 6 months, it's a fraudulently the person has taken the policy, and within 6 months, after 6 months he died, but he's claiming after 3 years. What would be the scenario? No. If it is Yes, proved, when he is going to claim, but if the it is proved. policy duration is less than 3 years, yes. The duration is calculated or just 3 years. Proposal में Maybe after 3 years. नहीं sir. Even after after 10 years, even after 10 years of the death, if he is coming and claiming, company can still liquidate provided the policy duration is only less than 3 years. Okay. जैसे Subject to the evidence. Subject to the evidence. Yes, obviously everything goes with the evidence. सर अगर हमने प्रूव किया कि पॉलिसी से पहले उसको कैंसर है, तो भी 3 years के बाद पे करते हैं. इंटेंशन वाज रॉन्ग देयर. पॉलिसी को क्लेम करना बोल के इंटेंशन वाज रॉन्ग.
और 3 साल बच गया, 4th ईयर क्लेम आ गया, जब आ भी वही पे। Okay. Just to understand your question correctly, customer he was suffering from cancer. Yes. Today when he took a policy, he was suffering from cancer. Yes. So he survived for 3 years. Yes. 4th year he died for whatever reason. Then he comes to insurance company to pay normally comes to claim the benefit. And at that point in time, company gets to know that yes, he was suffering from cancer at the time of policy. Okay. Right? He has to declare. Company somehow he got also company has to pay. The reason being company को pay करना पड़ता है क्योंकि IRD ने clearly बता दिया कि like तुम्हें जो कोई सवाल करना है तुम्हें 3 साल टाइम देता हूँ, तुम जो कुछ भी चाहिए तुम इन्वेस्टिगेट कर लो, पूछताछ कर लो. In case if you have crossed the 3 years, even if it is fraud, yes, he had to pay. That's a कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो किया गया सर आज मेरे को जब तक पता है 8 साल के बाद प्रपोजल फॉर्म में पूछना नहीं है, लेकिन 3 इयर्स के बाद तो पे हुआ आता है। नहीं सर 8 साल वाला हेल्थ में है, ओके। लाइफ में वो जो बोल रहे हैं अंडर सेक्शन 49 आप 3 साल में जितना इन्वेस्टिगेशन करना कर लो, अगर उस समय आपको मिल गया कुछ गड़बड़ तो आप उसी समय पॉलिसी कैंसिल कर दो। बाद में अगर आप बोलोगे आपसे वक्त तो नहीं मानेंगे तो पे करना पड़ेगा, वही वो बोल रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीजेस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस को डिफरेंस नहीं है। whatever it is, whatever lifestyle. सुसाइड कवर हो जाएगा सब, सामान्य है। तो ठीक है। Suicide के लिए सामान्य टाइमलाइन है। So whereas all other diseases, whether it's a lifestyle disease or anything for that matter, terminal illness, yes, company has to pay. This particular clause, 3 साल का जो clause कर रहे हैं, 3 years to benefit the insurance companies so that they have enough time resources to adopt, deploy to nab the culprit. That is one. 3 साल के बाद इसलिए दिया गया है ताकि consumer protection. In that scenario, they have given consumer को ना पीड़ा किया जाए to protect customers. They have given the 3 years clause. ये कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए अगर यही अगर बात अवेयरनेस हो गया, सबको पता चल गया, अभी से सब प्लानिंग करेंगे 3 साल के बाद नहीं करेंगे। Good point. Yeah. I mean, this is exactly I was referring saying that the nexus they're planning in long term. Fraudsters जो है अभी long term plan कर रहे हैं. So I'll discuss about one of the case study in my coming slides. When the fraudsters they're planning in long term. ऐसा नहीं कि उनको भी पता है, सबको पता है. I mean, they know the rules and regulations better than any insurance company. They look at the loopholes. उसके हिसाब से वो काम करते हैं, उसके हिसाब से वो प्लानिंग भी करते हैं. तो में बहुत सी एजेंसीज काम करती है जो ये सारा स्कैम कहने के लिए स्कैम चलता है, तो ऐसे काफी एजेंसीज आइडेंटिफाई की है और उससे हाँ ठीक है. सर आप 3 साल के बाद केस इन्वेस्टिगेशन को देते हो? नहीं. ओके। The reason being, see, every investigation is a cost to the insurance company. ओके। Right? तो करने के बाद भी we cannot repudiate. As an insurance company, I cannot repudiate even after 3 years if I find out that it's a fraudulent claim. So then there is no point in investing time and money on something which I am not going to You pay get. based on only death certificate or when we Yes, based on whatever declaration that we receive. So basically. So what is the percentage of investigation you do when a policy is sourced? Okay, so we have something called as pre-issuance and post-issuance verification. Wherein pre-issuance मतलब policy या post-issuance verification. Pre-issuance में ये होता है कि underwriters, the life insurance underwriters, if they find some red flags, then they find such kind of cases. क्योंकि आजकल क्या है कि everybody they want to evolve. I mean जितना जल्द हो सके उतना जल्द policy issue कर दो कस्टमर को satisfy करने के लिए कि पॉलिसी ऑफ लॉगिंग किया 2 दिन में आपको पॉलिसी बॉन्ड भी डिस्पैच कर दिया. तो विद दैट मोटो इन द माइंड, कस्टमर सर्विस मोटो, दे गो अहेड एंड इशू द पॉलिसी अनलेस दे कम अक्रॉस एनी रेड फ्लैग. तो उस सिनेरियो में वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, बट दैट परसेंटेज इज वेरी मिनिमल. आई कैन से 8 to 10% ऑफ द केसेस गोस फॉर प्री इश्यूएंस वेरिफिकेशन. पोस्ट इश्यूएंस, that is
पॉलिसी आज इश्यू करती है, उसके बाद मुझे 3 साल का टाइम है. So that portion is huge. That would vary from company to company. If I have to talk about my insurance company, that is Generali Life Insurance, it is around 45 to 50% of the cases go for post-issuance verification. सर जैसे आपको पॉलिसी दिया और 3 साल का आपको टाइम है, तो समझ लीजिए 2 साल 11 महीने में उसका डेथ आ जाता होता है और आपके पास क्लेम भी आ जाता है. साइमल्टेनियसली आपके पास वो पॉलिसी वेरिफिकेशन का भी टाइम है. और उस समय अगर आपको पता लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट मीन्स से पॉलिसी दिया गया था, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यस, एज ए इंश्योरेंस कंपनी वी डू हैव द राइट टू लिक्विडेट. अच्छा, आप पॉलिसी कैंसिल करेंगे या रेपुडिएट करेंगे? ओके, ट्रिकी क्वेश्चन. ओके, पर्सन डेथ होने के बाद कैंसिल ही हो जाएगा पॉलिसी ऑटोमेटिक. एक ओपन सीक्रेट बता देता हूँ मैं. So most of the insurance companies, I mean, as you all know, anybody who chooses the life insurance policy, they look at the claim ratio of an insurance company. अगर आप आम जनता पॉलिसी खरीदना चाहती हैं, तो they always look at the claim ratio और claim settlement ratio, right? कोई some X company is at 95%, X company, Y company is at 90%, somebody is 96, 98, so it varies. So how exactly they calculate is number of claims received, number of claims honored, number of claims rejected. So that's how the ratio is calculated. The scenario which you are talking, claim आया, उसके तुरंत investigate किया, it is a early claim, as I said, within 3 years. Claim investigate किया, करने के बाद, in case if you find there is some non-disclosure, which is very material, then we liquidate the claim. For example, the percentage is very less. Suppose a dead man insurance, बंदा है ही नहीं है या मर चुका है already, with all fake documents, somebody has locked in the claim. So in that scenario, there is no contract coming into existence. Insurance contract आने का सवाल ही नहीं है. So in that scenario, they cancel the policy so that it doesn't affect the claim settlement ratio. Right. तो आप जब पॉलिसी कैंसिल करेंगे, तो you will return the premium. Yes. Normally pro rata basis पे या पूरा? pro rata basis में. Normally pro rata basis में mortality charges और जो भी charges रहता है nominal रहता है, तो that's the only deduction that we do. If the policy is declared void, then why? इसमें कुछ कंपनियां क्या कर रही है कि एक तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस कर देती है प्रो रेटा बेसिस में, बट अगर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम अगर उसमें इंटरवेन करता है, बोलता है कि इस पॉलिसी को फ्रॉड एक्ट करो और मनी को फॉरफिल करो, तो कुछ सिनेरियो में मनी फॉरफिल भी होता है, कुछ सिनेरियो में मनी फॉरफिल भी होता है. बट ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा आज तक जितने मॉडल्स बने हैं कंपनीज के जो वर्क फ्लो मैनेजमेंट है, उसमें उन लोगों ने फ्रॉड टैगिंग रखा ही नहीं. सॉफ्टवेयर में फ्रॉड टैगिंग नहीं होने के कारण वो फुल रिफंड हो जाता है या प्रोपोर्शनेट रिफंड हो जाता है. बट अब रिसेंट जमाने में कंपनियां वो डेवलप कर रही है या बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, फ्रॉड में टैग कर दे तो पूरा वापस नहीं होता कुछ भी. क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन का आपको एक्सपेंसेस होगा, वो आप पे बर्डन है. अगर आप पॉलिसी पूरा रिटर्न कर देते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन का बर्डन भी आप ही पे है. Correct. That's a big company takes into account as a management expenditure. But normally we don't calculate all these things and add it to customer or the nominee. लेकिन जो कस्टमर ने जो भी प्रीमियम किया है, उसका mortality expenditure जो बोलते हैं, so only that portion gets deducted and rest we. As per IRDA norms, whether the cancellation of policy after claim, even though it is within 3 years, is allowed. See, IRDA doesn't specify when to cancel or when to liquidate. खाली They have given you liberty of 3 years. हाँ, 3 years. So it's all like somebody is finding a loophole in the. There is a claim within 3 years, and simultaneously you are finding that policy was taken with some fraudulent intent. You are cancelling the policy. As Whether that is allowed. That is also allowed. After claim it is allowed. Yes, it is allowed. The only thing is when the contract is not going to be material in the first place. Had we known this particular fact, Right. the contract is not material. जैसे कि dead man insurance है,
या कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया at the time taking the policy itself. So based on the fake documents, the policies, the contract doesn't come into existence. तो उस वक्त क्या companies cancel the policy. Contract ही null and void हो जाता है. Yes. And IRDA doesn't question on these things. So as long as it is within the legal limits framework. Yes. Actually, as per the IRDA's point of view, they have kept a 3 years cap of 3 years. That is the actual intention is that if the person is paying the premium for the next 3 years continuously, and the insurance company is enjoying that premium and investing into the debt market or equity market. So IRDA is asking that when you are enjoying the premium of the person for the 3 years, then you are liable to pay the insurance claim amount. That is the actual intention of the IRDA. As per insurance company, हमारे लिए investigate करके उसको कैसे भी replicate करना है. That is the only intention, sir. Right. कहीं replicate करना नहीं है, but the thing is, false claim pay नहीं होना चाहिए. That's the intent. As an insurance company, see, even if we consider that 96%, 95% when the company is honoring 4% या 5% पे करने में ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन वो 4-5% it's going to result in a fraudulent pay, which we doesn't want. That's the reason we investigate, we make sure that wrong pay is not happen. See, as in a corporate governance, we say that you can pay whatever that is rightful to any person. Wrongful 1 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहिए. Wrong pay. So that's the intent. So small clarification. In case of suicide, the claim is not payable, right? Payable. See, in life insurance, if the suicide is within 12 months from the date of taking the policy, if the suicide is within 12 months of taking the policy, not payable. The claim is not payable. After 12 months, 1 साल के बाद pay करना चाहिए. Sir, yeah. Sorry. Sir, as we are aware that a lot of fraud are going around. So in life, if somebody is creating an excess, somebody have a clear intention of a fraud. So we have like any system like civil or like this one IIE. There we can rectify that this claim has been reputed or this agent has been creating some nuisance. So you have some, we can have some like, we have some systems where we can rectify these people or we can rectify that this person's claim has been blacklisted or this DSA has been blacklisted. So in future they cannot issue policies for multiple companies because you have rejected. That is the information that future generation. But what about the other companies? What about the other organizations? They are not getting any information about it. Right point, right question. Currently, Insurance Bureau, IAB is there. So yes, they do have a repository called as the caution repository, which is still in the pipeline. So we are just working with the IAB, wherein they are developing a software. New business के लिए है already. For all the life insurance companies, yes, whether the policy has been declined, postponed, issued, or cancelled or repudiated for whatever reasons, those repository is already there with IAB. So the fraudulent activity, IAB is still in the process of developing it. Maybe it might take another couple of months or maybe by the end of this year, they are going to come up with a repository where the access is going to be given only to life insurance companies at this point in time. Maybe in future they may spread to other companies or other entities. उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस जो है IAB is still in the process of collecting data from all the insurance companies. वो चालू है. So wherein be it a insurance employee, agent या medical center, for example, जहाँ customer का medical होता है, या even some of the investigation agencies who does this fraudulent activities. Intentionally they submit some fake documents, so based on which company rejects that particular agency.
So इन सब का एक repository बन रहा है. So where all the industry companies they are all contributing to that particular repository. ये बनने में थोड़ा और समय लग सकता है. So maybe may take by end of this year. Right. Moving on to let's claim early claims and non-early claims. So early claim is the major focus area at this point in time because, as I said, the returns, the risk for the company is higher. Hence, company adopts lot many activities like pre-issuance verification, post-issuance verification, and even discipline verification. So ये जो कुछ भी है वो 3 साल के अंदर करना चाहिए. So that is where we require your support as a field, because as a company we cannot go and investigate in the field. So hence we require support of investigators and detectives like you, where your services are required, right? So some of the scenarios which any life insurance company encounters, as I said, is misselling, then submitting some forged or fake documents. These are the major concern areas which any insurance company encounter. The top 3: misselling, fake documents, and non-disclosure. These are the major focus area at this point in time. Not only for our company, it is for the entire industry which is facing. Non-disclosure, something like lifestyle diseases like hypertension, diabetes. These are the common thing nowadays. But still, customers do not disclose. It's not the customer he doesn't disclose. जो एजेंट या एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं. कस्टमर ने बोल दिया होगा लेकिन उन एजेंट या एम्प्लॉयज ने वो एप्लीकेशन में अपडेट नहीं किया होगा. Because of which company ends up paying the claims when death happens. Right. So these are some of the examples. सर लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है उसके लिए भी पॉलिसी कैंसिल करते हैं लाइफ का जनरली. Provided it varies from case to case basis. If it is decided by the underwriters, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग रहता है, उसका how it's going to impact his income, earning and the coverage that he has asked. Based on that, underwriters take a call. कुछ केसेस में जाने दे देते हैं कि बाद में like as I said, post investigations में हमें पता चलता है कि like customer is suffering from diabetes. हमें पता चला कि customer is having diabetes. If that diabetes in a permissible limit या borderline में है, या customer is under the control of diabetes, he is under regular medication, he is under proper exercise, कुछ information मिल जाता है, तो company says ठीक है चला दो. So they may allow the policy to be continued, or they may charge little extra premium from the customers. Now, I mean, frauds happen everywhere. Correct. Suppose if I am speaking about Karnataka, you may, I mean, every life insurance companies, they may be aware, few districts or few taluks, they are all fraudulent. Is it possible to avoid issuing policies in those places? See, it is easy to avoid, but the thing is, for the business, it's an opportunity as well. So we cannot say that we will not give policy to this particular pin code when you say district. Yeah. If I have to put it across in a pin code based on the insurance companies, they plot the locations. Suppose one particular district is having maximum claims. So we cannot say that all the people over there deciding they are all fraudster. So we cannot deprive somebody coming from that particular location. We cannot say that we will not give insurance. So hence what company does is they take some extra due diligence in that scenario. जैसे post issuance या customer point verification करवा लिया, जैसे investigation agency meets the customer in person, understands everything, then he submits the report. Underwriters they take call on that, or they may ask for some extra income documents. या customer का कुछ bank statement ले लिया के to understand whether he is in regular transaction what he is asking for the insurance coverage. या कुछ मेडिकल करवा दिया कि to ensure that he is fit and fine. So these are the extra due diligence company adopts instead of rejecting the claim, yeah, instead of avoiding it.
there are few districts in Karnataka wherein everything is staged, everything is done, and a guy who goes for investigation, he is supposed to issue the report what they say, and he will not come alive or completely if he opposes that. So I am speaking about only those districts wherein all the life insurance companies are suffering from fraudulent. That is, I am not speaking about 1 or 2 cases, because maximum number of cases are fraudulent in that particular belt. Yes, it is not only Karnataka. Like if I have to talk about like Bengaluru district, then in Ahmedabad, Banaskantha, whatever area that, or even in Bihar, some next slide areas. So Odisha, in Visakhapatnam, in Andhra Pradesh, Telangana. So lot many places are there. ऐसा नहीं कि एक स्टेट में एक ही लोकेशन है, तो या पैन इंडिया में एक ही लोकेशन है, तो it is spread across entire India. India itself is a huge country, तो obviously ये हर जगह में ये spread out है. तो हर एक का अलग अलग तरीका है. कुछ लोग मतलब I know wherein some of the fraudsters they go and approach cancer hospitals. They collect the data, go and approach those customers saying that वैसे भी ये बंदा मरने वाला है 3 महीने 6 महीने या 1 साल में मरने वाला है, तो एक काम करो पॉलिसी ले लो, आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा. I'm talking about some poor BPL below poverty line का जो लोग रहते हैं. They will say that I will invest on your behalf. Only thing is you have to provide all the documents. You will take the insurance policy. Insurance policy के लिए भी मैं ही खुद पैसा रखता हूँ. ऐसा नहीं कि आपको देना है. जब क्लेम आएगा तो उसमें से आपको इतना X amount मिलेगा, बाकी जो है वो मेरा है. तो this is how it runs. Nexus ऐसे चलता है. Why don't you consider that district as a gold mine for your business opportunities? It is very difficult to enter there and get the reputation. That is our expertise. How we are dealing with that. No, they are all covered with all gundas, sir. Yeah, we have mentioned that we may not be senior investigator here, which is working in Jammu and Kashmir. I feel there is no tougher place than Jammu and Kashmir, and he was working since last 35 years, and he is facing all these difficulties which we can't even think. So this is can be taken as how we can deal with the situation. Yes, so this is a common challenge that yes, as an insurance company we all face. Like just to give you a recent case, last week one of my executives he visited in Odisha. There is one particular location. He went there for investigation. Nobody turned up. When he called the customer's number, somebody he came in a motorbike and he said that Bengaluru लगा दिया उस बंदे को. तो देखिए ये सारा जो है मतलब you give a standard report. अगर कुछ नहीं करेगा ना तो तेरा गया. मतलब he took every details, his vehicle details, his Aadhaar number, mobile number, सब कुछ ले लिया. बोला कि like make sure that this claim gets passed. उसको डरा के धमका के उसको भेज दिया. तो वो बंदा है तो luckily he had captured every details in his record mobile phone. उसने वीडियो ऑन करके रखा हुआ था तो पूरा रिकॉर्ड हो चुका था. So based on that we repudiated the claim. जब होगा देखा जाएगा. Yes. So but luckily that fellow also he came forward saying that I am okay to face any kind of challenge. So I am part of this industry. I am part of the investigation is my core job and मैं इसे डरूंगा. So he came bravely. So we as an organization we facilitated him. And also we said that yes, it's a good job. So we have to recognize such hard workers and especially those who doesn't care about their life and they come forward. So इतना आसान नहीं है. ये मैं कहना चाहूँगा कि with my experience of 3 decades of investigation, तो ये जो होता है शुरू होता है धमकी से. जब हम धमकी से नहीं डरते तो आता है फिर लालच देने में. Yes. उसके बाद में उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो कुछ कर सके. वो उनका भी एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ धमकी के लेवल तक ही ये डिपेंड होता है. आपको रिवॉल्वर दिखाएंगे, आपको और भी चीज़ों से करेंगे. अगर आप वो डर जाते हैं तो ठीक है, उनका काम हो गया. इफ दे आर नॉट सक्सीड तो फिर उसके बाद में दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शन. तो उसमें आता है कि आपको लालच देंगे, आपसे मीठा करने की कोशिश करेंगे. तो उनका कॉन्फिडेंस का, जैसे हमारा कॉन्फिडेंस जो है उससे ऊंचा होना चाहिए
तो वो फिर पीछे हट जाते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम 100 केस फ्रॉडुलेंट कर रहे हैं तो छोड़ दो, 10 को जाने दो यार, इसके बीच में मत आओ। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस ऊंचा हमेशा रखना चाहिए कि ये ऑप्शंस तो हमेशा ट्राई होते हैं हमारे ऊपर कि पहले धमकी आएगा फिर लालच आएगा, तो आपको बस अपना एक इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंस ऊंचा रखना है। परफेक्ट सर, सही बोला आपने। यस, डेफिनेटली आई एग्री विद टिल्ला सर। यस, आई मीन आई हैव सीन लॉट मेनी केसेस लाइक दिस। पहले लालच भी देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आप ये पास करा दो तो आपको इतना मिलेगा या इतना दे देता हूँ, एंड सम ऑफ देम दे हैव ऑफर्ड मनी आल्सो। यस, how I need to put it across, like that fellow he took money, बोला कि like जब पैसा आ रहा है तो क्यों जा रहे हो, लेकिन मैं अपने काम से नहीं धोखेबाजी नहीं करूँगा। He took money, he submitted that money to a charity fund और उसका एक रिसिप्ट भी दे दिया उसने कि देखो मैंने उससे 25,000 लिया था, 25,000 मैंने चैरिटी फंड में मैंने डाला हुआ है, ये रहा। So that I am not a culprit, I am not a fraudster, neither I am involved with this. In the same time, this is the actual report. तो ये भी हुआ था। I would suggest one better way which investigators should do. So if someone is offering you some financial benefit at the time of investigation and you are in a situation where you cannot deny that, because if you deny you may get into some negative situation. If you have taken that money, take that money, go to the police station, give that money at the police station and record your GD entry. That is even more better, because अगर आपने उसको कोई सोशल फंड में जमा किया तो you are going to take tax benefit of it, तो ऐसा बोल के फिर से आपके लिए बेनिफिट नहीं आ जाएगा। So better you immediately inform to the concerned company and second you file a police complaint. Yes, correct. That's the better one. That's the legal solution. Moving on to what is the expectation? So these are expectations like, ये तो आप करते ही हो, जैसे पूरी तरह से slide just stated, background verification, interview with the nominees, then gathering evidences, forensic analysis. Forensic analysis in the sense like authenticating the KYC documents or any records that you collect as evidence, right? Be it a death certificate, KYC documents, or any bank statement, or any other statement. So these are like how genuine it is, whether medical papers, the doctor who is certifying it, whether those are genuine or not. ये सब आपको देखना पड़ता है। So these are the activities which, if field investigator, he should carry out when he submits, before he submits the report to the insurance company. Right? Surveillance, like कई बार ये होता है कि नॉमिनी जो है वो सीधे से पूरा जवाब नहीं देता है या देती, right? So बदला मिल चुका है तो उसके बाद how exactly they are, with whom they are colliding with, कि नेक्सस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ऑन द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में हमें एस्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल होता है कि लाइक डॉक्यूमेंट्स सब जेन्युइन है, सब ऑथेंटिक है, लेकिन जो एक्टिविटी जो है वो सस्पिशियस लग रहा है हमें, लेकिन उसको कैसे क्रैक करें। तो सर्विलेंस मतलब थोड़ा निगरानी रखना पड़ेगा कि लाइक फॉलो करो किन दिन से वो बातचीत करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उनका क्या लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या अप्रोच ले सकते हैं। तो दीज आर थिंग्स व्हिच इन्वेस्टिगेटर ही नीड टू अडॉप्ट। उसको देखना चाहिए कि लाइक एक दो दिन के लिए थोड़ा मॉनिटर करो नॉमिनी को कि वो किससे मिलता है, किससे मिलती है, या कौन आता है जाता है उसके घर, किन से कॉन्टैक्ट में रहता है, या सो दोस थिंग्स इन्वेस्टिगेटर ही ट्रैक्स देम फॉर कपल ऑफ डेज, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। At least we get a clue to proceed further. Then social media monitoring. Social media आजकल तो सर ये सब करने के लिए फीस कितना देता है कंपनी हमने? सर जो आप मांगोगे। Because normally it is 7,000 to 8,000 for any life cases. Fees. If you are doing so much,
I mean, the fees will be more. I doubt it. All the insurance companies will be prepared. Yes, sir. It may, yeah, agree. Fees जो है, it varies from case to case basis. I don't deny on that. क्योंकि हर एक company के लिए they will also try to minimize the cost. ठीक है, जो बंदा 4,000 में भी करने के लिए there are investigators who offer some kind of service at 10,000 also, 20,000 also. So it varies from person to person or agency to agency. Yes, for the insurance company. हर एक केस के लिए मैं 10,000 दूंगा, ये भी नहीं बोल सकते हैं, या हर एक केस के लिए मैं 4,000 दूंगा, ये भी नहीं बोल सकते हैं. In industry there are some companies which offer incentives in the sense like ठीक है आप केस क्रैक करो तो इतना एक्स्ट्रा मिलेगा, केस नहीं क्रैक हुआ तो दिस इज स्टैंडर्ड फीस वो भी है. ये मैं इसमें थोड़ा ऐड क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है रहेगा. तो कैसा है कि एनी इंश्योरेंस कंपनी फीस देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है. When there are some standard works to be done, when there is some specialized work to be done. अब जैसे if you have to get into some kind of surveillance, you have to monitor the people go, you have to go behind him 24 hours and then you have to see what he does, where he goes, whom he meets. In those situations, we also understand what the fee should be. हमको मालूम है कि 5,000 रुपये दूंगा उसमें ये नहीं हो सकता है. तो obviously what he is trying to say that आपको जरूरत के हिसाब से you will be paying it off. Secondly, if any scenario, if suppose there is some activity which insurance company has asked you to do, which is for the first time they are doing, or you are also doing it for the first time, you also don't know what is the cost of that entire work, and even the insurance company is not aware about the cost of the work. In those situations, you should actually get into a deal with the insurance company saying that this is the overall cost, make it as reasonable as possible. And you should say सर इसके ऊपर 20% मेरा प्रॉफिट है या मेरा प्रोफेशनल फीस है for monitoring this. So this is my cost which I am paying. I request you to pay this much. Sensibly, I feel insurance company accept this and they will pay it off. This is what we do normally. Yes, no. Actually, जनरल प्रॉब्लम क्या होता है सर, जो कंपनीज पेइंग वेरी गुड फीस, those companies जब उनको काम करते हैं एक्स्ट्रा वर्क लगता है जब पे नहीं होती है. जो कंपनीज सर while digging into empanelment लीस्ट अमाउंट देते हैं जब उनका पेन, जब एजेंसीज को पेन होती है. जब जो केस में ज़्यादा एवरी केस को टफ नहीं लगता है, थोड़ा केस हाफ अमाउंट में हो जाता है, तो केस को टाइम लगता है. एवरेज पे जो चलते हैं एजेंसीज को उसकी I will tell you there are 5 different fingers in hand. Different insurance companies deal with insurance investigator in different way. You also deal with 5 different companies. You also know किसका nature कैसा है. But it should be your ability to convince the company and tell कि ये genuine cost इतना लग रहा है. Cost to cost मेरे को 50,000 रुपये लग गया. अब suppose someone has to do a marine recovery. माल चोरी हो गया है, वो माल खोजना है, उसमें आपको 2,000 किलोमीटर ट्रैवल करना है. And you have really traveled. You have got all evidences. You can say कि इतना पेट्रोल खर्चा हुआ, इतने लोगों को जाना पड़ा, ये टोल नाका पे मिला, इतना खर्चा हुआ. With all those if you say and कल कंपनी को बोला कि 5 करोड़ का माल आपका रिकवर कर दिया है. अब मैं आपको वहाँ बोलूँगा मैं 5,000 रुपये फीस दूंगा तो इट्स नॉट वायबल. अगर मान लो मैंने एक बार आपके साथ गलती किया, नहीं किया, तो अगली बार आप ही नहीं काम करोगे मेरे साथ. तो ये क्या होता है, इट इज गिव एंड टेक. इफ आई लूज अ गुड इन्वेस्टिगेटर वंस, आई विल लूज हिम फॉर एवर. सो वी आर ऑल्सो सेंसिटिव. वी डोंट वांट टू लूज अ इन्वेस्टिगेटर. नहीं है मतलब कहने का मतलब क्या है कि वी आर वेरी सेंसिबल ऑन दिस इश्यूज. माइट भी पहले एक जमाने में कभी हम लोग एक स्टैंडर्ड फीस लेके चलते होंगे और उस फीस से आगे बाकी आंख बंद है, बाकी कुछ मालूम नहीं है. ऐसा हम लोग हो सकता है पहले होंगे, बट नाउ वी ऑल आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर कुछ बड़ा केस क्रैक करना है तो वी हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल. वो होता है. मैंने मुझे लगता है कि दिस शुड नॉट बी यू गाइस वरी. मतलब ये मैं सोचा था कि जब मैं जाऊंगा तो ये टॉपिक मालूम होने वाला था, तो अभी हुआ तो मैं अभी इसलिए बोल दिया एक बार. आपको इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेना. नहीं सर, बजाज का तो तारीफ अच्छा है सर, इशू नहीं. मैं प्रॉमिस I'm talking about our Bajaj cars are really good. जनरली क्या होता है कि यस ऑन केस टू केस बेसिस यस कंपनी दे डू टेक इट कॉल. ऐसा नहीं कि हर एक केस के लिए बस इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं. मतलब इट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग. ऐसा नहीं कि इट्स लाइक कंपनी बोल दिया तो वेंडर को मानना ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं. तो वेंडर ही कैन कम, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे कैन कम एंड दे कैन से देखो सर मैं इसमें ये सबूत लेकर आऊँगा तो इसके मुझे एक्स्ट्रा खर्च होता है. Yes, I myself have dealt with
कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर आते हैं सर इसमें मुझे ये डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कराने हैं, कोई हॉस्पिटल में गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता है कि लाइक आसानी से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, राइट? तो दे कम एंड दे से दैट सर वो इतना एक्स्ट्रा मांग रहा है तो अगर आप दोगे तो आई गेट इट, तो दैट्स अ डील, क्योंकि कंपनी को अगर 1 करोड़ का सम शॉर्ट बचाना है तो यहाँ कुछ 10-15,000 या 20,000 व्हाटएवर एक्सपायर किया हो, अगर वो कुछ मांग रहा है तो there is nothing wrong with it, and company take into account that yes if there is a provision we will pay that. हर एक में ऐसा नहीं होता है ना, तो not in every case, in some of the cases जहाँ क्रैक करने में आपको एक्स्ट्रा खर्च लगता है तो yes company also takes into account, ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं देती है, it's at the end of the day ये कंपनी का ही रिस्क है, राइट? तो आप जितना एफर्ट्स लगा रहे हो, जितना आपका टाइम या एफर्ट्स जा रहा है उसके लिए whatever that is reasonable thing that you ask वो मिलेगा आपको. Yeah, I was touching upon the social media monitoring. आजकल ज़्यादातर customers या आम जनता जो है तो they are all on the Facebook, Instagram या professionals or on LinkedIn or these kind of social medias are there. So can we track those customers कि उसका पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ था? So those things, especially in a life insurance death claim, monitoring these things will play a vital thing. कि उससे पता चलता है कि उसके दोस्त लोग क्या हैं, रिश्तेदार कौन हैं. Sometimes it so happens that रिश्तेदार जो है उनको actual information रहता है. अगर मान लो कि कस्टमर ने या उनके घर वालों ने मिलके कुछ कहानी बना दिया और क्लेम सबमिट किया, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स बाहर वाले जो रहते हैं या दोस्त लोग जो रहते हैं सबको सब कुछ नहीं रहता है, पता नहीं रहता है. Mostly social media profile is locked. Yes sir. Facebook profile. इससे पहले फोन नंबर मारे तो आ जाता था सर, फोन नंबर क्लोज हो गया, फोन नंबर कुछ भी करो नहीं संदीप जी को सर का फोन स्पूफिंग जो टेक्नोलॉजी है वो है तो पूरे केस टूट ही जाएंगे. हैकिंग का नंबर Instead of giving me a fish, better teach me fish. that's it. Surely. So yes, I mean देखना पड़ता है कि like how exactly you can monitor, how you can track these things. So these are one of the some of the pointers for you to understand when you get into the field. कि किस तरीके से हम केस को क्रैक कर सकते हैं. लिंक एनालिसिस के वो नेक्सस, अगर कुछ नेक्सस का इन्वॉल्वमेंट है तो वो जानना है. देन कोलैबोरेशन विद द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, पुलिस स्टेशन हो गया या कोई लॉयर से या जो भी है, तो उनसे हाउ एग्जैक्टली वी कैन कोलैबोरेट एज इंश्योरेंस investigators. So ये सब इनका काम होता है, right? So any doubts, any questions? I just want to touch upon few case studies जो actual में जो हुआ था in my organization, in my experience. तो death claim submitted stating customer died due to heart attack. Investigation revealed customer was alive. पता चला कि कस्टमर जो है वो जिंदा है लेकिन नॉमिनी ने क्लेम फाइल कर दिया. So how exactly approach the investigator उसको बता दिया कि रेशन शॉप तो रहता है गांव में, तो it was a very high sum assured case. बंदा जो है वो झोपड़पट्टी में रहता था and the sum assured was in close. Somebody was not making. So the approach what we adopted here is like एक बंदा अपना इन्वेस्टिगेटर जो है वो रेशन शॉप में गया, उसके बारे में पूछताछ किया, तो there also he got very less clue or information about it. तो उसको थोड़ा चेक कर दिया शॉप ओनर को, रेशन शॉप ओनर को. He went and approached as a food inspector. उसको बोला कि भाई आपके घर में कौन कौन है, क्या क्या है, तो ये सब पता चला. तो पता चला कि जो कस्टमर जो है वो घर में ही बैठा हुआ था. So when food inspector along with that our investigator when he visited, so then they got to know that this customer is still alive. तो उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो उसे इसी पूछताछ में बातचीत में ऐसे पता चला कि उस बंदे को किसने बोल दिया कि लाइक 15,000 हर महीना मिलेगा 3 महीने के लिए.
45,000 he is going to get. घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ये इंस्ट्रक्शन था। मतलब it's an excess. Wherein they had just paid 15,000, वो 15,000 के लिए उसने खुद का KYC डॉक्यूमेंट्स दिया था और उसके बाद उसने बोला कि देख घर से बाहर नहीं निकलना है। तो the sum assured was more than 1 crore. तो ये जब इन्वेस्टिगेटर फूड इंस्पेक्टर के साथ जो गया था तो पूरा रिकॉर्ड किया तो बातों बातों में उसको पता चला कि ऐसा ऐसा है। So that's how we cracked it. तो सीधी इंग्लिश से जब What action you took on the sales guy? Sales guy normally we do terminate in such kind of scenarios, and here in this case even he was also conned. So internally we took some not that harsh punishment, but we took some other punishment like demote कर दिया उस बंदे को because it is not एजेंट जो है एजेंट को हमने टर्मिनेट किया, बट जो अपना एम्प्लॉय खुद का जो एम्प्लॉय है he was also conned, उसके साथ भी थोड़ा blame employee they had played with him, so we had to demote him. आज के डेट में तो मैक्सिमम फ्रॉड which are happening, it is happening because of these agents, intermediaries, and I would just a suggestion and you can take it to yourself. So one is we should move ahead to file a license cancel for these agents first. Second one is file a police complaint on that agent. Before filing a police complaint, see how much what is the reward. अभी तक कितने कस्टमर का लॉस रेशियो उसके कारण ज़्यादा आया है, and then if you verify more, you will get a quick trend. This as a company को लूट ही रहा हो. Yes, I agree with you. Yes, what we do is whenever we receive any claim, जैसे जब भी कोई भी डेथ क्लेम आता है कोई भी बंदे का, especially agents, उसका पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस वो भी हम करते हैं. That's how we देखते हैं कि कितना क्लेम से कितना पॉलिसी इशू है, कितना रिजेक्ट हुआ है, तो ये कस्टमर कहाँ के लिस्ट है और ये बंदा कहाँ रहता है, तो ये सारा चीज़ें जो है हम एक एनालिसिस होता है, तो उसके दौरान हम देखते हैं कि कुछ verification करना है, तो then that's how we proceed. So this is an important message. So when you guys are doing investigation and submitting your report, it's not necessary कि वो claim खाली fraud होगा. There might be a multiple claim उसी बंदे का जो fraud हुआ होगा. Then in your report you should ask from the insurance company कि आप मेरे को बताओ कि इसका sales history क्या है. What is the claim history of that sales? Suppose I am the sales agent. I have sold suppose 1,000 policies. 1,000 पॉलिसीज में सपोज एक पॉलिसी में आपको फ्रॉड मिला, तो हो सकता है कि मैं और भी पॉलिसीज में फ्रॉड कर रहा हूँ, या हो सकता है कि आने वाले समय में मैं फ्रॉड करूँगा, मतलब जिसमें भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट टू ट्राई कि अगर इससे क्लेम निकल जाए, तो यू शुड ऑल्सो बी आस्किंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम योर एंड कि मेरे को बताओ ये इन्फॉर्मेशन. देयर वी विल फील मोर कंफर्टेबल, वी विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट यू गाइस कि यू आर थिंकिंग बियॉन्ड सर्टेन लेवल. Sir, couple of cases we have asked for these details, but it was not shared. Either they have reciprocated that, sir आप ये report दे दो, फिर देखते क्या है. ठीक है, That is a casual approach. कंपनी टू कंपनी में कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहो, आप ये मत सोचो कि वो देंगे कि नहीं देंगे. अगर मान लो उन्होंने दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं. छोटा एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ. I was in Morena, I think many people might be knowing. So Morena में एक केस गया इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद. वहाँ उतरा एंड वहाँ का जो एड्रेस है इज अनट्रेसेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एरिया इज एन एक्सेस. So I just directly went to the postmaster. वहाँ सुपरिटेंडेंट को मिला. He sent me with one postman and take this person to particular address. The moment I went over there was no claimant was available. So immediately I just called the claimant number and one person called me and he said that please 10 minutes बैठिए. Immediately after 5 minutes a group of Nexus entered. I think many people might be in that area might be knowing Rajesh Gohar. He is a setter actually over here. So उसके अंदर फिर उसके साथ 5-6 बच्चे हैं. वो कोई सेम यूपी स्टेट वाला दबंगेज टाइप मफलर वगैरह जैकेट पहन के. तो वो आया, हाँ जी आप कहाँ से आए? तो हमने हैदराबाद से.
सो ओके ठीक है, कौन सा केस है दिखाया उसने, ओके चलिए क्लेमेंट यहाँ नहीं रहती है, आप मेरे साथ आइए। एंड ही मेड मी वॉक ऑल द वे फॉर 15 मिनट्स एंड वो संकरी गलियों में से निकलते मैंने सोचा आज मेरा काम तमाम। Immediately he took me to one particular flat where in first floor he made me sit over there and उसके 4-5 बंदे बैठे हुए थे एंड हाँ जी सर आपका फाइल बोलिए कौन सा है। तो उसने मैं समझ गया आई कांट मेक मच मोर इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। Immediately I just showed the claim form, this is the file. So उसने उसके असिस्टेंट को दिया ये फाइल का डॉकेट लेकर आ रहा हूँ अंदर से। The person went inside 2 BHK 3 BHK flat जो भी है अंदर गया वो अलमारी खोला तो उसमें I think there might be hundreds of dockets and he removed that particular file and लाके मेरे सामने लगा दिया, लीजिए आपको जो फोटो लेना ले लो करके। तो उसके अंदर जो मैं इस टाइप के डॉक्यूमेंट सेम एक्जेक्टली दिस इज टाइप इसके अंदर ऑल द केवाईसीज आर मेंशन्ड इन ओवर देयर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बैंक एसबीआई का जो भी है तो सब नया ब्रांड न्यू। सो आई जस्ट टेकन द फोटोज एंड ऑल। तो उसमें कुछ भी नहीं, क्लेमेंट इज आउट स्टेशन है, आपको जो भी चाहिए चाहिए। तब उस समय हम लोग क्या करेंगे एज एन इन्वेस्टिगेटर? As an investigator, yes. Immediately I just called the clinic manager. हाँ उसके बाद जब after completing all this process, okay fine राजेश जी मैं निकलता हूँ। नहीं हम छोड़ देना आपको करके। Then he took a bike and he made me sit in the back side of him. मेरे पीछे एक और बंदा ट्रिपल्स। फिर उसने मुझे ग्वालियर स्टेशन जो है नियर स्टेशन में जाके पहुँचा दिया उसको। So this is how the things in access are going. In the same case, my investigator, another case, he went over in the same area. वहाँ पर that is horrible. वहाँ तो claimant वो इसने राजेश गोहर मिला और उसने बोला कि यही घर है आपको जो चाहिए ले लो। तो मेरा investigator ने बोला कि where is the claimant? तो claimant first floor में है, आप जाके ले लीजिए। And this fellow was sitting standing in the ground floor on setup. मेरा बंदा ऊपर गया तो ऊपर लॉक है, तो एक बच्चे के हाथ से क्या है चाबी भिजवा, ये चाबी है खोल लीजिए आप अंदर जाके जो फोटो लेना ले लीजिए। मेरा एग्जीक्यूटिव गया एंड ही ओपन द लॉक एंड जैसे दरवाजा खोलता है अंदर से 3 लड़कियां अंदर बंधी हुई है। दिस इज अ पोजीशन इन दैट केस आवर इन्वेस्टिगेटर्स हमारे एग्जीक्यूटिव्स का लाइफ भी उतना ही थ्रेटेंड है एंड वी हैव टू टेक आवर सेफगार्ड इन आवर ओन वे। Insure for higher value. Pardon, sir? Insure yourself for higher value. Of course. Yes. So such type of things are going on, sir. Yes, I agree. Okay. So these things are common. I agree. Lekin as a the point which he was giving is like yes, how what investigators should do in that scenario. Yes. जो भी documents उन्होंने दिया है देखो, but the other checks that you have to do, जैसे डॉक्टर के पास जाना है या म्युनिसिपैलिटी या जहाँ से भी या पंचायत ऑफिस में जो आपको वेरीफाई करना है, those things yes you should conduct। इन लोगों ने जो दिया है हो सकता है कि फेक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इन लोगों ने जो नेक्सस ने जो रिपोर्ट दिया है तो जरूरी नहीं कि वो सब जेन्युइन है, तो वो फेक भी हो सकता है। बट ओनली थिंग इज सब कुछ आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है to make your life easy कि आपका काम हो चुका है, लेकिन that is not your task। आपका काम बनता है कि like नॉमिनी से एक्चुअली बात करना है, उसके घर जाना है, देखना है, आजू बाजू लोगों से बातचीत करना है, म्युनिसिपैलिटी या बरियल ग्राउंड, क्रिमेशन ग्राउंड या डॉक्टर्स ने जिसने सर्टिफाई किया है, तो ये सब वेरीफाई करना है आपको। तो that task you have to perform। अगर आपने नहीं किया है तो then that's a flaw in the process। सर उन लोगों को पता होता है, एक चीज आप क्या एडमिशन करेंगे उनको पहले पता है। Yes, मैं वही बोल रहा हूँ कि like more than you and insurance company they know the losses। In many cases those guys already know who is the claim manager in the company who assigned this case. They did the PhD in this fraud। इसमें मैं सभी इन्वेस्टिगेटर को एक चीज कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई ऐसा थ्रेट आता है या कुछ आता है, ठीक है आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे उसको डील करते हैं,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसमें AID जो हमारा एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पुलिस को कंप्लेंट जाना और एक इंडिविजुअल, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वहाँ पे पुलिस को भी ग्रीस किया हो सकता है, तो इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको फॉलो करते हैं। और हमारे वहाँ पे जब AID की तरफ से कोई कंप्लेंट जाता है कि ये ऐसा ऐसा कल्प्रिट या न्यूसेंस यहाँ पे है, तो वो उसका थोड़ा जो पर्सपेक्टिव होता है पुलिस वाले का वो चेंज हो जाता है। और पुलिस वाला है ना फिर हमारी जो बात सुनता है, मतलब उसको प्रेशर में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे उनके हैंड्स एंड ग्लो होगा, लेकिन वो होने के बाद भी वो हमारी कंप्लेंट लेता है बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सबको यही अलर्ट करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है कि ये एक कलेक्टिव कंप्लेंट होना चाहिए, तो AID इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू। आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं और वहाँ के हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसको डील करते हैं। Good thing which I was not knowing, so thanks आपने बता दिया। नहीं, I literally I was not knowing that this particular association helps in fighting the police complaint. So it's a good thing that till now I was thinking. Sir, our motive is to eradicate the frauds. Yes, sir. तो अगर उसके रास्ते में कोई भी आता है तो हम उसको कलेक्टिवली, है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अगर वो है कि हम इस सोसाइटी से अगर इन्वेस्टिगेशन करके फ्रॉड खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम करेंगे। और जब मेरा ऐसा मानना है कि समाज में थप्पड़ एक को मारा जाता है तो आवाज 100 हो जाती है। तो ये जो एजेंसीज वगैरह जो ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, तो हमको थप्पड़ एक ही को मारना है, लेकिन आवाज 100 तक पहुंच जाए तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। You can say that incident with Koliwada when we was aware of it, and after that Koliwada was totally silent. This activity basically we had rescued just for the also. About 15 to 20 years back, we, Jalga, myself and other people, one of our colleagues was banned in Koliwada in that area. And he was captured, you know. And he was captured. In fact, he was also captured. He was also, shutter was down and he was under the cell block. But in that previous case, we all surveyors, we went immediately at that garage. And when they saw us, we all institution looked there. They recognized ourselves. We are familiar with it. And when we found that so much people is behind that person, then automatically he has to let him back. And next time, they were quite sure कि भाई ये लोग आएंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे. They directly said, okay, ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ा. इवन वो पुलिस वाले ने उससे गैरेज वाले से पैसा खाया हुआ था, लेकिन जब हम उधर कुछ 15 लोग गए, सबको कॉल किया हमने कि सब आ जाओ पुलिस स्टेशन में। तो जब हम 15 लोग गए तो उसको उसका FIR रिकॉर्ड करना पड़ा हमारा। पहले वो FIR ही नहीं ले रहा था, एक आदमी से जो विक्टिम था उसका FIR ही नहीं लिख रहा है। तो जब उसने हमें इन्वॉल्व किया, हम लोग वहाँ 15 आदमी गए और जब एक हमारा कलेक्टिव एक्शन उधर हुआ तो उसको FIR रिकॉर्ड करना पड़ा और वो 4 दिन का रिमांड उसको लिया गया। और वो फ्रॉडस्टर है ना, उसके बाद में वो दुकान बंद करके भाग गया वहाँ से। और उसके बाद में ऐसे इंसिडेंट ना के बराबर है मुंबई में। आज जो मुंबई में एग्जांपल है कि जगह जब आते हैं तो ये गैरेज वाले को भी अंदर करवा देते हैं। तो दिस इज एक, मैंने कहा ना जैसे कि थप्पड़ एक को लगेगा लेकिन आवाज 100 को जाती है। This is not an easy task, but ये कलेक्टिव टीम वर्क था। मैं अकेला कुछ नहीं unity comes into picture. So सबका साथ सबका विकास. As a matter of fact, these case to case the things and situation will vary. But what first Mr. Jaga said is that your confidence should be more than the. I share 2 small incidents. In one case, I had filed a civil complaint against somebody who was occupying a common property. So he threatened me first. He threatened me in a way that he threatened me publicly, so that I feel insulted. One, nobody came for my support, and secondly, he started threatening me through other people also that you don't know how bad a man I am and what can I do with him. These were his words. So I very coolly told the person who brought this threat to me
then tell him now, till now it is only a civil complaint I have filed. But if something happens to me, tell him that I am writing a diary every day of whatever is happening with me, though I was wrong. And secondly, I inform my family everything which happens with me in the day. So if anything happens to me, he can be culpable for a criminal case. Today he is so much disturbed with my civil complaint. Tomorrow if a criminal complaint is filed against him, then tell him that what consequences can happen with him. This is what I counter threat. And ever since he became silent, and I finally won that civil complaint also. This is one incident. In second case, I went to do a survey. Now, the person who were attending that from the insured side, I asked who is the insured. So the person replied me, "You don't know Mr. So and so?" I said, "I don't know. He is the one who has done 2 murders." I was surprised. "Why are you saying me this? Are you threatening me?" I directly asked, "Are you threatening me?" Then he was taken aback. Then this reply he also did not expect. But this is what Mr. Jagga said, is that you should have more confidence. I said, "You need not. I just asked that who is insured." But this disturbed me, that why has he tried to impress on this? That means something wrong maybe there. And I found that the entire claim was fraud. And there was a police diary also of the accident, because the police was also involved. So these kind of things you have to assess according to the situation. But your confidence and definitely your professional skills make you better and better. And this will come with experience over a period of time. Thank you. Thanks for sharing your experience. Yeah, quickly moving on to, I think, short of time. Quickly, I'll just take another 10 minutes. Yes. There is one more case I just want to share. Impersonator appeared in the name of customer with fabricated documents. After policy issuance, early claim was reported within 6 months. So how exactly we tracked? Enquiries made local address book the person by showing the photographs. We did not make any inquiries by saying the name of the person. Instead, we did the inquiry with the photograph. Photograph से हमें पता चला कि like fabricated किसी और को plant किया गया था वहाँ. So when we conducted an inquiry, वो inquiry भी ऐसे किया था कि like relatives of this particular person. जो फोटोग्राफ लेफ्ट साइड में जो है वो पैन कार्ड का एक्चुअल फोटोग्राफ है. दूसरा जो फोटो है दैट्स द एक्चुअल पर्सन हु अपीयर्ड एज ए कस्टमर. कस्टमर को याद है लेकिन इस बंदे के नाम से आया था. सो व्हेन वी कंडक्टेड एन इंक्वायरी बाय शोइंग द फोटोग्राफ कि आप इस बंदे को जानते हो, तब हमें पता चला कि वो बंदा जिंदा है. So sometimes we had to adopt different kind of strategy how we can unearth some of the fraud element. Right. Quickly moving on to एक customer जो है, they was staying one of the posh locality of a city. ये दिल्ली का फोटो है. So where customer was staying one of the premium apartment. वहाँ अंदर जाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का चेक होता है. तो विदाउट कस्टमर्स कंसेंट मालूम नहीं करते हैं. उसके बाद अंदर जाने के बाद और एक टवर के लिए भी एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है. वहाँ पे भी कस्टमर का कंसेंट होना चाहिए, तभी जाके वो टवर के अंदर जाने देते हैं. So this particular person, the customer, when they file a claim, वो अंदर जाने तक नहीं दे देते हैं. तो सिक्योरिटी गार्ड को भी थोड़ा सेट किया. तो reaching the particular place to check where exactly customer is, आजू बाजू लोगों से वेरीफाई करने के लिए भी वो बहुत मुश्किल था. So the strategy what we adopted is security guard और वहाँ का जो क्या होता है the sweepers जो रहते हैं उनको थोड़ा सेट किया to understand who exactly stays in that particular location. तो उनको सेट करके एक क्या होता है वाईफाई कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने की कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके that's how the person entered that particular apartment. वहाँ जाने के बाद वहाँ चेक किया तो customer was not staying there, someone else was staying.
and they were all fraudsters. So intent was they were trying to alert the person whoever is coming for investigation. So investigation रोकने के लिए ये address किया है. Again, that was also a high sum assured case. So we had to adopt different strategy to reach out to the customer. क्योंकि जब भी हम कॉल करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि गेट करने आ रहा है, तो वो बोलेगा कि आप वही रुको, मैं गेट के पास आ जाता हूँ. So that was one scenario. Having understood कि क्या-क्या चीजें हो सकता है सिस्टम में, तो that we know. लेकिन what are the legal provisions? कानूनी की तरफ से हम क्या कर सकते हैं? What are the things that are available? As a company, as an investigator, तो हम क्या कर सकते हैं? तो Indian Penal Code जो है, उसके हिसाब से there are only couple of acts which can apply to any insurance fraud. That is 205, that is impersonation. If somebody is impersonating, कोई नकल कर रहा है तो section 205 है, तो उसके हिसाब से imprisonment up to 3 years, or there could be some penalty. That's the only thing. 420 का charge लग सकता है. Again, that also varies. And 464 is forging some documents. 405 criminal breach of trust. In India, there is no particular rule. If somebody has done insurance fraud, be it life or non-life, जो भी है, specific rule नहीं है. That is where we are lacking as an industry. So whatever That comes under is IPCC renting and practice. It is under the process of. they can take up the code. So that is one. As a legal remedy, as per Indian Contract Act, Section 18 है जो मिसअप्रोप्रिएशन के तौर पे हम लगा सकते हैं. Then Section 20, that is you can cancel the agreement. Those are the only two things that are available as an insurance company. There is something called as Insurance Fraud Act. Hold on to it. It is not yet applicable in India. US में, UK या Denmark या Canada ऐसे countries में है, लेकिन in India we do not have something called as Insurance Fraud Act. So it is still under the process. पता नहीं कब होगा. And then challenges, as I discussed, Section 45, वो 3 साल के अंदर हमें पॉलिसी कैंसिल करने का जो मौका मिलता है, that's the only thing. And then legality to prove suspicion. As an insurance company, हमें मुझे पता है कि इसमें fraud है, fraudulent element है, लेकिन फिर भी जब हम कोर्ट में, that is ombudsman या consumer court कहीं पे भी हम जाते हैं, so they will ask for the evidences in the form of documents. So no matter how much of a suspicious that I am running with, but still I have to produce the evidence, so without which it is not possible. So that is a major challenge as the industry that we are facing right now. Right. That's it from me. Thanks a lot for your time and valuable experiences. Just to show that how exactly what we are looking at and how exactly we are looking at it may not be the same. So it's an illusion. Actually, you said there is no law. Recently. Sir, question answers last. Okay. Please. Sure. Sorry for that. Maybe you can catch up offline. Yeah. Thank you so much, sir.